हे गाइस, चाहिए 1 घंटे का ज्ञान 10 मिनट में तो देखो हमारे न्यू वीडियोस। देयर इज अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन, मतलब जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया भी था कि वो मिसकंसेप्शन वाला कि इट्स ऑल अबाउट रेसिंग। बट ऐसा नहीं है। गेम वाला पॉइंट का डिसएग्री कि लुक्स द गेम इज वेरी there's a hook you mentioned. Yes. So because of that hook na, it's not just speed. Please understand. That's what you're talking about. Yeah. It's not just speed, but it's also tactical. It's also some science there. A lot of science. It's also some sort of trading that is involved. So I think it is one such sport which has amalgamation of a lot of business aspect, sporting aspect, personality aspect. Plus it's the most dangerous sport. It is. But like what do you mean by trading? ट्रेडिंग से मेरा ये मतलब है कि जो ड्राइवर्स हैं, ठीक है, देर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट. हर ड्राइवर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, Like transfers. देर आर ट्रांसफर्स, दे इवन हैव एजेंट्स. आई टेल यू, ऑस्कर पियास्ट्री's case, his agent was Jenson Button, Yes. who was negotiating all his deals. Jenson Button, for you because you don't watch. He's a British driver. He's won the championship once na. I think so. Yeah. He was Hamilton's teammate Acha. Way back in McLaren, when he started like 7 years. 7-8. He was one of the best in that era. He was then succeeded by. He also has a podcast now, by the way. उसका भी podcast है Jenson Button का. And he was succeeded by then young driver, as we all know him as Vettel. Sebastian Vettel was young that time. He joined Red Bull, and then you had that 4-5 year का 4-5 साल 10 से में 13 वाला. Vettel वाला era था. Vettel won all the four four championships. championships. लाइन से जीता वो. and जो Indian GP में जो races थी, he won all the races. एक बहुत आइकॉनिक फोटो है उसकी, बाउ डाउन करते हुए कार को. वो बहुत इंटरनेशनल सर्किट की इंडिया की. अच्छा. वो इधर चैंपियनशिप जीता था तब वो, एंड ही बाउड डाउन टू द कार कि लाइक व्हाट अ पीस ऑफ मशीन. लाइक इनसेन. It's very interesting यार. All of it is very interesting. कि लाइक ब्रो इतना टेक है इसमें कि लाइक एराज होती है लिटरली. लाइक मर्सिडीज की थी टर्बो हाइब्रिड के टाइम, लाइक देयर वाज दिस न्यू कॉन्सेप्ट इन द कार्स. अब जैसे ये टेक चेंज हो गई, कार्स चेंज हो गई हैं, फॉलो ज़्यादा कर सकते हो सब. रेड बुल इज डोमिनेटिंग एंड नो वन इज इवन क्लोज. लाइक डिफरेंस दिखता है सेकंड्स का भाई. नहीं, बट एज अ कंपनी रेड बुल के मामले में यार मुझे ये भी देखना पड़ेगा. व्हेन आई सी अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, बी इट लाइक डर्ट बाइक, समथिंग विंटर्स वाला हो गया, ओलंपिक, F1 है हमारे यहाँ पे, फुटबॉल है. रेड बुल हैव लाइक कवर्ड एवरीथिंग. कहीं ना कहीं एक रेड बुल एज अ कंपनी इज जीनियस. अमेजिंग यार. Genius. क्या मार्केटिंग है यार. एंड दे उनके पास एक वो है ब्रो, अगर इफ यू सीन दिस सोप बॉक्स रेसिंग, Yes. Of course. इट्स They have फनी. लाइक भाई बेसिकली अब उसके मतलब वर्ल्ड लेवल के कॉम्पिटिशंस हो रहे हैं, मतलब इट्स अ ईयरली थिंग नाउ. एंड दे उनका वो भी है कि लाइक यू हैव टू मेक समथिंग टू फ्लाई ऑफ. दे हैव सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. एंड रेड बुल का आई थिंक दिस ग्लाइडर चैंपियनशिप आल्सो, जहां पे अमेजिंग है कि जितने आगे तक आप ऊपर रहोगे पानी में they picked up on a niche. You see, this is the product comes in this. ये तो अपन ने याद ही नहीं किया. And what is the मतलब they making इस पे पैसा बना रहे हैं वो लोग. But not a sponsor. Not a sponsor. That's why I turned it back. we wish. That's why I turned it back. Time. But the things that they're associated with, soapbox racing हो गई, F1 racing हो हर गई, चीज है और पता नहीं they're sponsoring all the adrenaline वाला stuff. bro. Championships, races, mountain climbing and whatnot. This one thing I noticed, very small thing. क्रिकेट में अभी they started sponsoring players. नोटिस करना सारे यंग प्लेयर्स के बैट्स पे ही होते रेड बुल के, जो भी अप एंड कमर्स होते. लाइक संजू सैमसन जब 1-2 साल पहले he had the logo, KL Rahul had the logo, like all the new people up and comers had the logos bro. So like उनका वो भी दिमाग देख कि like they're just trying to sponsor the future stars. They're not trying to sponsor कोहली या रोहित शर्मा या top level. But being a soft drink company, मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा अच्छा मार्केटिंग, इतना ज्यादा जो एक
स्पोर्ट्स को लेके उनका वो है कि इनिशियली इट वाज ऑलवेज लाइक एक एनर्जी ड्रिंक है, नाउ दे आर एसोसिएटिंग स्पोर्ट्स एंड क्रेजीनेस विद इट, और उसका आपको आज फर्क पड़ रहा है. मतलब आई थिंक इंडिया में, मतलब लेट्स टॉक अबाउट इंडिया फर्स्ट, कि आज से 4-5 साल पहले तक रेड बुल वाज लाइक कि ठीक है, बहुत इट वाज वेरी लग्जरी प्रोडक्ट. अभी हर जगह मिल रहा है, इट्स एवरीवेयर Bro, but see, I feel even Prime is going on the same footsteps, marketing wise. Yeah. Marketing wise, I'm not saying anything because unka price point is double. It's very, So yeah. that is different. But marketing wise, even they're like, But they sign big clubs, they sign UFC, they sign बट like रेड big बुल names. का F1 में क्या लेना देना, मतलब कैसा चल रहा है अभी, कब वो लोग एंटर कब किए इसमें, इनिशियली थे या अभी इनको आई थिंक एक डेकेड No, so I have this fun fact. या Okay. प्लीज. So Stake F1 team अभी launch हुई, like launch नहीं हुई, it's just took over Alfa Romeo and so Sauber. Sauber has been this बहुत पुरानी team, बहुत time से, and that was the team that introduced Red Bull into F1. इन विच ईयर? I don't know the year, 6 or 7. That's what I remember. हाँ, but उनके उस पे पहला marketing logo था Red Bull का, अच्छा. and that is how Red Bull came into F1. हम्म. And that team is now dead because Stake ने take over कर लिया. But it's called Sauber Steak. It's Or it's just only called Steak. Stake. Oh, Sauber is done now. done now. Yeah, which is थोड़ा sad क्योंकि बहुत time से थी. टाइम से भी थी, and in fact Sauber is one team जहाँ से जो champions थे, it was known to be the champion producing team. Like stepping अच्छा, उसके stone. निकले हुए लोग आगे जाके चैंपियंस बन Yes, सकते yes. हैं. उनका BMW के साथ था. Yeah. क्या क्या प्लेयर्स निकले वहाँ से? I think Leclerc. Kubica, Robert Kubica. Or there are a few good names. Yeah. I think Schumacher, if I remember. The initial Sauber Benetton में start किया था ना? Benetton में था, sorry. Benetton में start किया था. But But Sauber was important like overall. बहुत भाई तो देखना BMW को लाए थे. Leclerc अभी Audi को ला रहे हैं. हम्म. अब तो 25 में. हाँ अब तो चेंज हो गई टीम, बट स्टिल दे वर द इनिशियल वो की लाइक Audi आए एंड देन Alfa Romeo, लाइक बिग कंपनीज मैन, लाइक बहुत हुआ है लाइक. पर हाँ one coming back to the F1, what do you think is the watershed moment? Like in our generation, all of us are like in our 20s. So when did you guys actually connect? F1 सर. F1 से. I started watching F1 जब I think 2014 around I started watching. What about you? Hamilton was destroying everyone तब. Yes, yes. And like बहुत natural instinct था like as a new fan की like अबे यार इसको हराओ कोई यार. यही जीतता है हर बार यार. So तब I think जब ऐसे स्टेज पे होता है ना कोई स्पोर्ट की like एक ही टीम जीत रही है या एक ही वो हो रहा है, तो बहुत मुश्किल होता है न्यू फैंस का घुसना, क्योंकि इट्स लाइक कि लाइक बोरिंग है यार, एक ही जीत रहा है बार बार. But at the same time आप फैंस, मतलब जो भी उस टाइम पे डोमिनेट कर भी रहे होता है ना, उसके भी ज्यादा फैंस उसी टाइम बन रहे होते हैं, बिकॉज डू लाइक ग्रो अप वाचिंग समवन की यार जीत रहा है. अगले 5-6 इयर्स में लाइक आपका एक कहीं ना कहीं हो जाता है कि हाँ यार मैं जब देखना चालू किया था ही वाज द विनर. सो But Hamilton का for the reasons also he was iconic because he was like the first black driver to reach that level. व्हाट अबाउट यू? I went into F1 जब Drive to Survive came out. For me, I mean, that was the watershed moment. The reason I'll tell you why was after watching the series, वो जो स्पोर्ट था ना वो सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं था. Glorify हो गया था. I got to know कि what is actually happening Behind the scenes. ऐसा नहीं कि आप बस कार ले ली and you just drive on the track. How do you drive on the track? What is the quality of your car? What are the specifications? What is happening with the bosses behind the scenes? Pit stop, although it's a 3-second pit stop on an average. वो 3 second is a कितना slow बड़ा slow टाइम stop. है. मतलब कितना किसी ड्राइवर के लिए कोई 3.5-4 सेकंड का स्टॉप कितना डेवास्टेटिंग हो सकता है.